खबर इस वक्त की है, एलजी सरकार से सलाह लेकर ही कोई भी काम करे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र पर बड़ी बेंच को फैसला भेजा गया है। स्पीकर ने असली व्हिप की जांच नहीं की। ये तमाम बातें जो अब उसमें आ रही हैं, व्हिप अपॉइंटेड पॉलिटिकल पार्टी इज क्रूशियल फॉर 10th शेड्यूल, जो तमाम बातें कोर्ट की तरफ से व्हिप को लेकर, स्पीकर को लेकर कही गई है। संजय, एक बार वो अगर आप बताएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो शिंदे गुट के लिए अब लगता है जैसे ये झटका है। व्हिप को लेकर जरूर उस पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं और उन तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो सवाल याचिकाकर्ताओं ने उठाए हैं। लेकिन ये मामला लार्जर एस्पेक्ट पे अगर जरूर लार्जर बेंच पे चला गया है, लेकिन जहां तक हम बात करें तो व्हिप को लेकर कोर्ट ने सही सवाल उठाए हैं। और व्हिप को लेकर या फिर सुबह तड़के जो शपथ ग्रहण कराया गया था उसको लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो सवाल उठाए हैं। उस पर जैसे ये फैसला अपलोड होगा वैसे बहुत सारे पर्दे इस पे खुलने वाले हैं। और झटका सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट को ही नहीं है, झटका शिंदे गुट को भी है। बस हमें इंतजार करना पड़ेगा थोड़ी देर का। जो बड़ी बातें कही गई हैं कि स्पीकर को पहले से जानकारी थी कि लेजिस्लेटिव पार्टी में दो अलग अलग टुकड़े बन रहे हैं। 3 जुलाई 2022 को जब उन्होंने नए व्हिप को अपॉइंट किया था। इसके आगे वो कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि स्पीकर ने कोई भी कोशिश नहीं की कि वो आइडेंटिफाई करे कि प्रभु या फिर गोगावले दोनों में से कौन सा व्हिप ऑथराइज था पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात ऋतिक कही गई है कोर्ट की तरफ से, स्पीकर मस्ट रिकॉग्नाइज ओनली द व्हिप अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो पार्टी ने पॉलिटिकल व्हिप अपॉइंट किया था उसी को मानने की जिम्मेदारी थी जिससे वो हटे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है ऋतिक। राजनीतिक पार्टी जिस गुट का अभी एग्जिस्टेंस नहीं है उसके व्हिप की कोई मान्यता नहीं होगी। मान्यता होगी जो पॉलिटिकल पार्टी ने ऑथराइज चीफ व्हिप या व्हिप जारी किया है और उसकी ही मान्यता होगी। स्पीकर को यह पता था कि दो ग्रुप हैं, इसके बावजूद स्पीकर ने दूसरे यानी अपने मनपसंद के गुट को मान्यता दी। तो इन तमाम चीजों पर भी कोर्ट ने विस्तार से अपने फैसले में लिखा है। और ऐसा नहीं है कि ठीक है सरकार भले बच गई हो, लेकिन सरकार बचने के बावजूद जो कहते हैं कि हमारे स्लैंग लैंग्वेज में कपड़े फटना, वो भी बचे नहीं रहेंगे। उसमें भी बहुत सारे सवाल उठेंगे। ये तो बहुत बड़ा झटका है फिर कि आपने जिस व्हिप को अपॉइंट किया वो मेन पॉलिटिकल पार्टी द्वारा जो अपॉइंटेड व्हिप है वो नहीं था। एक बार दोबारा फैसला सुनाते हैं संजय, क्योंकि अगर ऐसा है गोगावले को व्हिप अपॉइंट करने को लेकर बड़ा प्रश्न है तो ये झटका है शिंदे गुट के। Some objective material to dislodge this presumption. The MLAs did not express their desire to withdraw support from the MVA government in the resolution dated 21 June 2022. Even if it is assumed that the MLAs implied that they intended to exit from the government, they only constituted a faction of the SSLP and were at most indicating their dissatisfaction with the course of action adopted by their political party. The political imbroglio in Maharashtra arose as a result of party differences within the Shiv Sena. However, the floor test cannot be used as a medium to resolve internal party disputes or intra-party disputes. Dissent and disagreement within a political party must be resolved in accordance with the remedies prescribed under the party constitution or through any other methods that the party choose to opt for. There is a marked difference between a party not supporting a government and individuals within a party expressing their discontent with the party leadership and functioning. The governor is the titular head of the state government. It's a constitutional functionary who derives his authority from the constitution. This being the case, the governor must be cognizant of the constitutional bounds of the power vested in him. He cannot exercise a power that is not conferred on him by the constitution or a law made under it. Neither the constitution nor the laws enacted by parliament provide for a mechanism by which disputes amongst members of a political party, particularly, can be settled. They certainly do not empower the governor to enter the political arena and play a role, however minute, either in inter-party disputes or in intra-party disputes. It follows from this that the governor cannot act upon an inference that he has drawn that a section of the Shiv Sena wished to withdraw their support to the government on the floor of the House.
It is true that the letter dated 25 June 2022 sent by some MLAs of the Shinde Sena to the governor, requesting him to issue directions to the appropriate authorities for the restoration of their security, details mentions that those MLAs no longer wanted to be a part of the corrupt MVA government. However, this cannot be taken to mean that they had withdrawn their support on the floor of the House. Nothing in any of the communications relied upon by the governor indicates that the dissatisfied MLAs from the Shinde Sena intended to withdraw their support to the Chief Minister and the Council of Ministers. At the highest, the various communications expressed the fact that a faction of the MLAs disagreed with some policy decisions of the party. The course of action they wished to adopt in order to air their grievances and redress them was, at the time the floor test was directed to be conducted, uncertain. Whether they would choose to enter deliberations with their colleagues in the House or in the political party, or mobilize the cadres, or resign from the assembly in protest, or opt to merge with another party was uncertain. Therefore, the governor erred in relying upon the resolution signed by a faction of the SSLP MLAs to conclude that Mr. Thackeray had lost the support of the majority of the House. Second, the governor relied on the letter dated 25 June 2022 from 38 SSLP members, claiming that the security provided to them and to their families was illegally withdrawn. The MLAs claimed that the security was withdrawn to coerce them into continuing to support the MVA government against their free will. Therefore, they demanded the restoration of the security provided to them and to their family members. After receiving the letter, the governor issued directions to the state police to provide adequate protection to the MLAs, the members of their families, and their property. However, the lack of security to the MLAs has no bearing on the question of whether the government enjoys the confidence of the House.